हाँ जी, hello students. हाँ जी, welcome back. So let us continue with the same topic, that is Cartesian product. So today we'll do the next exercise 2.1. So very first question of this exercise is if this first question is if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 it is equal to 5 by 3 1 by 3 5 by 3 1 by 3. So you have to find the values of x and y. So as you know, this question is very easy. So two pairs are equal means first is equal to first and second is equal to second. So we have x upon 3 plus 1 equal to 5 upon 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. So when you solve this, this becomes x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1. When you take LCM, we get x upon 3 is equal to, this is 2 by 3, 3 से 3 cancel, so we have this value is x is equal to 2 and this y is equal to 1 by 3 plus 2 by 3. So when you solve this, we get 3 by 3, that is 1 is the right answer. So these are the values of x and y for the question number 1. Now let us take a second question. Let us take second question of this exercise. This question is if set A has 3 elements and B has 3, 4, 5. Set A has 3 elements, यानी कि number of elements in A is equal to 3 and the set B is 3, 4, 5 or 5, 4, 6. This is 5, 4, 3, 4, 5. Yes. So this is the value of set B. Question is find the number of elements in A cross B. So as you know, number of elements of A in A is 3 and number of elements in B is number of elements इसमें भी 3 है. So as your question is you have to find the number of elements in A cross B, means you have the formula NA into NB. So we have this answer is 3 into 3, that is 9 is the right answer. Clear? This is very easy. You have to find the number of elements in A cross B, right? So let us take the next question. I think these questions are very easy to understand. So let us take the third question of this exercise. Question number 3 is if G is equal to, question number 3, if G is equal to 7, 8 elements 7, 8 and H is equal to, और H में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? These are 5, 4 and 2. 5, 4, 2. So these are the values of G and H. You find G cross H and H cross G. आपको G cross H find करना है और H cross G find करना है. So as you know the definition of this Cartesian product, these are the set of ordered pairs. So G cross H यानी कि 2 into 3 6 pairs बनेंगे. So ये बनेगा, सबसे पहला बनेगा आपके पास 7, 5. पहले 7 के साथ 3 बनाने हैं, फिर 8 के साथ 3 बनाने हैं. 7, 5, 7, 4, 7, 2, then it is 8, 5, 8, 4, then it is 8, 2. Right? So these are the pairs in G cross H. Now when we find H cross G में H को पहले रखना है, G को बाद में रखना है, यानी कि पहले 5 के साथ 2 बनेंगे. So we have 5, 7, 5, 8. Right? फिर 4 के साथ 2 बनेंगे, 4, 7, then it is 4, 8. After this 2 के साथ 2 बनेंगे, 2, 7
and 2 8. So these are the pairs in H cross G. So this is the question number 3. The question number 4 is state whether each of the following the statements are true or false. आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं. So if the statement is false, rewrite the given statement correctly. So the first statement is if P is equal to Mn, yes, if P is equal to Mn, we have the question number 4. First statement is if P is equal to M into N, M comma N, sorry, and Q is N, and Q is equal to N comma M, right? Clear? Then P cross Q is equal to P cross Q, it is equal to, this is M, this is Mn Nm, Mn Nm, Mn Nm. As you know, this statement is totally wrong statement. This is not the correct statement. This statement is not correct. So this statement is false. So when we correct this statement, the correct statement is P cross Q is equal to Mn Nm. तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें M, N, फिर M comma M, then N comma N, then in last N comma M. So there are 4 pairs in this P cross Q. This is the correct statement and this is the false statement. This statement is false and this is the correct statement. This one is correct statement, right? So similarly, second part is, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इसका है, हाँ जी, सेकंड पार्ट है इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is the non-empty set of ordered pairs x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. Yes, this statement is right because this is the definition. This is the definition of A cross B. The question is x y such that x belongs to A and y belongs to B. So this is the set of ordered pairs x y. So this statement is true statement. ठीक है जी, this statement is correct. Now third statement is if A is equal to 1 2. Third statement, if A is equal to 1 comma 2 and B is equal to 3 comma 4, B is equal to 3 comma 4, then A cross B intersection 5, A cross B intersection 5, it is equal to 5. हमने ये चेक करना है कि क्या ये ट्रू हो इसमें. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं दिस स्टेटमेंट. सबसे पहले A लिखते हैं. A क्या है? A आपके पास है 1, 2. ठीक है जी. इसको B और 5 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है. B और B में और 5 में 5 कॉमन है. तो 5 has no element, so you can say its answer is 5. So this statement is a true statement. True statement. ठीक है जी.
बिकॉज फाई और बी में कॉमन क्या होगा, फाई होगा, और ए क्रॉस फाई जो है वो फाई ही होगा, बिकॉज फाई हैज 0 एलिमेंट्स. So number of elements in 2 into 0, that is equal to 0. So that's why this is phi. Phi means empty set. ठीक है जी. So इसका आंसर phi आएगा, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. Now let us take next one. Let us take next question. This is question number 6. 5. Question number 5 is not in your syllabus because this is the triple Cartesian product, so this is not in your syllabus. So I am taking question number 6. If A cross B is equal to, question number 6 is, if A cross B is equal to A comma X, A comma y, A comma y, B comma x, ठीक है जी, and B comma y. So these are the possible pairs in A cross B. ठीक है जी. Find A and B. This question is also very easy. आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन करवाया था जो इसके तरह ही है. आपको पता है A क्रॉस B में जितने भी पेयर्स हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दैट इज द सेट A. Therefore from this we have the elements A and B in A and the elements in B are X, Y. आपको बताया था कि एक बार ये एलिमेंट लिखना, जैसे X जो है वो 2 बार है, Y 2 बार है, तो एक बार लिखा. यहाँ पे A 2 बार है, B भी 2 बार है, तो एक बार लिखा. यानी कि these are the values of A and B. Now let us take the next question number 7. हाँ जी, these questions are very easy. We have done these type of similar questions in the examples. So I think this is very easy to understand. Question number 7 is, हाँ जी, A is equal to 1, 2, B is equal to A has 2 elements, B has 4 elements, 1, 2, 3, 4. These are the values of points. B, C is equal to 5, 6 and D is equal to 5, 6, 7, 8. So these are the 4 sets. Verify करना है. First part है, you have to verify A cross B intersection C. It is equal to A cross B intersection A cross C. ये आपको verify करना है इसमें. You have to verify this result. So firstly I am finding the left hand side. Left hand side is A cross B intersection C. So A has the elements 1, 2 and B और C में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? हाँ जी, 1, 2, 3, 4 है और C में 5, 6 है. So there is nothing common here. So 5 is the value of B intersection C. So as you know, the cross product with any empty set is empty set. So its answer is 5. Similarly, when we find the cross this right hand side of this statement, so let us find the right hand side. When you find the right hand side is A cross B intersection A cross C. So पहले हम A क्रॉस B के पेयर लिखेंगे. कितने हैं? A क्रॉस B में आपके पास 8 पेयर्स आएंगे. पहले 1 के साथ आएंगे, फिर 2 के साथ. तो आपके पास आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, राइट? ठीक है जी. Then we have
2 1, 2 2, 2 3 and 2 4. So these are the pairs in A cross B. Intersection. हाँ जी, ए क्रॉस सी में कौन कौन से आएंगे? ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 पेयर्स बनेंगे। पहले बनेगा 1 5, दूसरा बनेगा 1 6, तीसरा बनेगा 2 5, फोर्थ बनेगा 2 2 6। सो दीज आर द 4 पेयर्स। एज यू सी व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स हियर। देखिए आपके पास ना तो यहाँ पे 1 5 है 1 6 है, 2 5 2 6 इसमें नहीं है। सो वी कैन से दैट there is no common element, there is no common pair among these two. So we have this 5. So as we see, the left hand side is also 5. So left hand side is equal to right hand side. So it is verified. This first part is verified. Clear? Now similarly you can do the second part. Second part is A cross C is a subset of B cross D. Second part is A cross C is a subset of B cross D. आपने इसको वेरीफाई करना है कि A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसे पहले हमने A क्रॉस C फाइंड करना है। फर्स्टली फाइंड A क्रॉस C। A क्रॉस C, A क्रॉस C में आपके पास पेयर बने थे, जैसे कि आपको पता है 1 5 1 6, 2 5 2 6, 2 5 and 2 6. These are the pairs in A cross C. Similarly, when we find the B cross D, B cross D means we have 16 pairs. First is 1 5 1 6, 1 7, 1 8, right? Similarly 2 के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8, then 3 5 3 6 3 7 3 8, then it is 4 5 4 6 4 7 4 8. So these are the possible pairs in B cross D. So बेटा आप देख रहे हो कि when you see all the elements, all the pairs of A cross C are in C. A के सारे एलिमेंट C इसमें B क्रॉस D में, इसका मतलब it shows that A क्रॉस C is the subset of B cross D. So it is understood that this A cross C is the subset of B cross D because all the elements of this are in B cross D, right? So this is the verification. Let us do the next question. Next question is question number 8. It is let A is equal to 1 comma 2, B is equal to 3 comma 4, write A cross B. सबसे पहले A cross B फाइंड करना है। Then how many subsets will A cross B have? मतलब कितने सबसेट होंगे A cross B में। सबसे पहले A cross B में कितने पेयर बनेंगे? 4, 2 into 2. सबसे पहला पेयर बनेगा आपका 1 3, then 1 4, then it is 2 3, then it is 2 4. These are the 4 pairs in A cross B. So as you know, the number of subsets is equal to 2 raised to the power n. यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 पेयर्स हैं तो 4 होगी। So how many subsets? Number of subsets of A cross B कितने होंगे? 2 raised to the power
4 subsets are there. So 16 is the answer, means the number 16 subsets will be there in A cross B, because जितने पेयर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 4 पेयर है तो n की वैल्यू 4 होगी यहाँ पे, तो n की वैल्यू 4 है तो 2 raised to the power 4 means 16 is the right answer. Clear? If you want to find the subsets, so you can write subsets of this A cross B, right? As you have studied in first chapter. Okay, let us take a next question. Question number 9. Question number 9 is, हाँ जी, question number 9 आपके पास है, let A and B are the two sets such that NA is equal to 3. NA is equal to 3 and NB is equal to 2. NB is equal to, इसका मतलब number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. Okay, if x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in A cross B, are in A cross B, ठीक है जी. Then find A and B where x, y, z are distinct elements. So अगर ये आपके पास 3 एलिमेंट्स A में हैं, 2 एलिमेंट्स B में हैं और ये A क्रॉस B में ये 3 पेयर इंक्लूड हैं, तो इट इज अंडरस्टूड दैट द फर्स्ट एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट. सो ठीक है जी, तो फर्स्ट सेट आपके पास A है, तो A हैज द एलिमेंट्स x, y, z and B has 2 elements and that 2 elements are 1 and 2. So this is the right answer. This is very easy. 3 elements in A, 2 elements in B, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और A क्रॉस B में 3 पेयर आपको गिवन है. ठीक है जी, 3 पेयर गिवन है तो 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिल गए x, y, z और 2 एलिमेंट्स आपको B के मिल गए 1 और 2. ठीक है जी, सो दिस इज द राइट आंसर. Clear? Now last question of this exercise is question number 10, that is, हाँ जी 10th question देखते हैं. Question number 10 is the Cartesian product of A cross A has 9 elements. यानी कि A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट्स हैं, 9 पेयर्स हैं. अमंग विच आर फाउंड, जैसे कि उसमें से आपके पास -1, 0 है, ये है हमारे पास, और 0, 1 भी आपके पास है. ठीक है जी, ये 2 पेयर्स उसमें सारे 9 पेयर्स में से मिल जाएंगे. ठीक है, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर इन ए क्रॉस ए. हाँ जी, बहुत इजी. देखिए यहाँ पे समझने के लिए बहुत इजी है, आप देख सकते हैं. A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं. इट मींस A हैज, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3. 3 एलिमेंट्स होंगे और वो 3 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. एक -1 होगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा. So therefore the value of A is -1, 0 and 1. These are the 3 elements in A. ठीक है जी. अब now remaining elements in A cross A are कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से. -1, 0 आपके पास है, 0, 1 है, बाकी कितने रह गए 7 पेयर्स. वो 7 पेयर्स आपने रिमेनिंग यहाँ पे लिखने. पहला पेयर आपके पास बनेगा -1, -1. दूसरा आपके पास बनेगा -1, 1. जो रिमेनिंग है वो देखने हैं हमने. तीसरा बनेगा 0, -1.
then it is 0 comma 0, right, and next is 1 comma minus 1, 1 comma 0, and 1 comma 1, and 1 comma 1. So these are the remaining elements in A cross A, right? So beta ji, so this was the your topic, Cartesian product, and this is very easy topic. So I think I hope you all are easy to understand this topic. So अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, then you can comment in the comment box, and I will explain this, or we will explain this. Any teacher, we are 3 teachers here of mathematics, so ठीक है, तो कोई भी टीचर आपको इसमें से डाउट्स बता सकता है, ठीक है जी. So these are the topics, Cartesian product. So this is I think all about this topic. Okay ji, thank you so much.